एक ऐसा AI मॉडल विच इज मेंट फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। ये क्लेम करता है कि ये काफ़ी हद तक स्मार्ट है। GPT-4 और GPT-4o से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। AI की दुनिया में बहुत कुछ नया हो रहा है एंड मे बी यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। और इस पॉइंट पे मेटा AI अभी कुछ ही टाइम पहले लॉन्च करता है Llama 3.1 को, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे LLM कहते हैं। बिफोर लर्निंग अबाउट Llama 3.1, अगर आपको LLM के बारे में नहीं पता तो इन शॉर्ट समझा देता हूँ। LLM मतलब एक ऐसा AI मॉडल विच इज मेंट फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। अब यहाँ पे पैरामीटर्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल कितना ज़्यादा ट्रेंड होगा, कितना ज़्यादा स्मार्ट होगा, और उसी को कंपेरिजन करके ये यूजेबल होगा। अब यहाँ पे कोई LLM कोडिंग के ऊपर स्पेसिफिकेशन करता है, वो टास्क टू टास्क डिपेंड करता है। हालांकि मैंने LLM के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देख लेना। नाउ Llama 3.1 इज द सक्सेसर ऑफ Llama 2 एंड Llama 3, जो कि पहले मेटा AI ने लॉन्च किया था, और ये क्लेम करता है कि ये काफ़ी हद तक स्मार्ट है। हर एक LLM मॉडल उसके पैरामीटर्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पैरामीटर्स मतलब कितने सारे डेटास उस मॉडल को दिखाया गया है और उसके ऊपर बेस करके वो ट्रेंड होगा और वो उतना ही ज़्यादा स्मार्ट होगा। इट इज़ जस्ट लाइक हाउ वी ह्यूमंस लर्न। इसका मतलब है कि ये LLM GPT-4 और GPT-4o से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज ये एक्चुअली डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो कि अच्छे से टेक्सचर्स को रीड करते हैं, अच्छे से पैटर्न को समझते हैं और अच्छे से लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन ये है कि ये AI मॉडल्स एक्चुअली में ट्रेन कैसे होते हैं, तो इसका आंसर है इसका पैरामीटर साइज। पैरामीटर का साइज का मतलब ये है कि कितना सारा डेटास, कितना सारा इंफॉर्मेशंस इस पैरामीटर को दिखाया जाता है और उसी इंफॉर्मेशंस को ये मॉडल कितने अच्छी तरीके से कंज्यूम करता है और इसे प्रोसेस करके रिस्पॉन्स क्रिएट करके देता है। इसका जो रिस्पॉन्स है वो एकदम से ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जैसा ही काम करता है। जितना ज़्यादा पैरामीटर का साइज होगा उतना ही ज़्यादा ये जो AI मॉडल है वो स्मार्ट बनता जाएगा और उतना ही ज़्यादा ये AI मॉडल आपको अच्छी तरीके से ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स आपको क्रिएट करके देगा। तो अब आपको पता है कि LLMs एक्चुअली में होते क्या हैं और ये किस बेसिस पे ये स्मार्ट बनते हैं। तो अब आता है Llama 3.1 पे। तो क्या ये उतना ही ज़्यादा स्मार्ट है? तो मैं आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाता हूँ। So just go and search over here Meta Llama 3.1 and you will be able to find it. Just go and click over here. So as you can see over here, you will be getting into the Meta site. If you go on models, you will be able to see Llama 3.1 enhancement. This Llama 3.1 LLM model is trained on 8 billion parameters, 70 billion parameters and 405 billion parameters. Okay, that means this Llama 3.1 is absolutely smart. And now if you visit the documentation site, you will be able to see this model icon. Just go over here and you will be able to find Llama 3.1 represents Meta's most capable model to date, including enhanced reasoning and coding capabilities, multilingual support, and all new reference system. So you just go and check it out by yourself how the entire LLM models from Meta AI works. Now let's check out how you can use Llama 3.1 in your system. So there are basically two ways. The first one is Meta AI conversational server, like Meta AI chat box. Inside this LLM chat box, here you will be able to use Llama 3.1 405 billion parameter version. You will get the experience of ChatGPT 4o. So just go and try it by yourself. The link will be in the description. Now if you want to use it locally in your PC, so what you can do is just to go 3.1 Llama, and here you will be getting access to Llama website. Here you can see Llama 3.1. However, this is the latest LLM models. If you by any chance don't know about Llama, then Llama provides LLM models.
and these LLM models are actually language models. So the most important thing is coding assistant. In my last video I have shown how to use coding AI. In coding AI you will be able to use this LLM model as a coding assistant. So here this LLM models claims that it is a flagship model and it is competitive with the leading foundation models across the range of the task, including GPT-4, GPT-4o and Claude 3.5 Sonnet. So it is directly saying, as we can see, it is trained upon 405 billion parameter size, so it is quite normal to be really competitive against GPT-4, GPT-4o and Claude 3.5 Sonnet. Important thing is it is absolutely free. You can use it for free basis. You can run this AI model locally, like inside your PC. All you need to do is just to go to the home page and here just click on download. Here you will be downloading the exe file. It is very simple, and if you check this video out, you can install each and every LLM models in your system. Not only Llama 3.1 but other LLM models, like as you can see over here. If you just go and search over here the other models, these are all LLM models. Check that video out. The link will be in the description or you can see in the I button. So that is it. Thank you so much for watching this video. If you love this video, then make sure to like and subscribe and hit the bell icon for getting more and more important video updates. And I will see you next time.